Welcome back to my YouTube channel. So guys, today I have a Realme 9 iPhone. So as you can see, display is fully broken, but it's working as well. So I want to change this display actually. So first of all, I want to show you how to disassemble the Realme 9i and how can we remove the damaged display and install new display. So first of all, I'm gonna remove the back glass. So this way easily we can remove back glass. So after remove the back glass, I have to unbolt the all screw. After unbolt the all screw, I can remove this plastic shield. तो अभी हम इसका टेस्ट ट्रे जो है इसको रिमूव करेंगे. ये फ्रेम है, इसको निकालेंगे. So I have to remove this frame. Display. Check. So this is a Realme 9i display. So first I'm gonna test the display working. Before install the display, we have to test the display because sometimes new display also have problems. So I'm gonna test new display. I hope it will work as well. Let's see. As you can see, the display is working as well. तो डिस्प्ले ओके है. तो अभी हम इसको जो कि डिस्प्ले को इंस्टॉल कर देंगे. इस पर न्यू डिस्प्ले लगा देंगे. ये वाला रिमूव करके इस डिस्प्ले को रिमूव करने के लिए हमें इसकी बैटरी पहले रिमूव करना होगी. सो फर्स्ट आई हैव टू रिमूव द बैटरी, देन आई कैन रिमूव द डिस्प्ले. सो जस्ट वी हैव टू पुल अप फ्रॉम हियर. वी हैव टू कीप देयर आल्सो इंस्ट्रक्शन पुल अप द बैटरी. सो दिस वे इजीली वी कैन पुल अप. To remove battery, I have to remove this display flex. Now I can remove the display as well. So this way I can remove the display. See, it's very easy to remove. No need to use any force or any mishandling. Dust removing. So before install the new display, I have to clean this border area. This is almost clean, but just one time I have to make sure there should not any come like that. So now I'm gonna put the gum T7000. This is a black gum, multi-purpose adhesive black. को इस पे लगाएंगे बॉर्डर एरिया पे.
So after put the gum, now I can install the display as well. As you can see, this way we have to install the new display. So also I have to put this speaker net, this anti-dust. So this way we can install the new display. So just put and press the display like this. So we have to connect the connector as well. So after put the display, I have to install the battery again. तो बैटरी को इस तरह इंस्टॉल करके इस पर इसका फ्रेम लगा देंगे, जो कि हमारा 90% मोबाइल जो कि ओके हो गया है। Put the SIM tray also. Insert SIM. Now I can on and test the display working as well. Mobile is on. Now I can test the display. It's working as well. So now I'm gonna install the back glass. For back glass, I have to clean this area. This double tape. Then I can put the gum and I can install easily back panel. से कम लगा, इतने प्यार से हाथ लगाऊंगा तो कितना मजा आएगा। हाथ कम करके भी तो मिलता है। यस, यूट्यूब को देंगे तो यूट्यूब पैसा देगा। ये यूट्यूब चैनल खुला है, उनको भी खोल लेंगे, पूरा खोल देंगे। इधर का नहीं करना, इधर में वो अभी अलाउ नहीं है ना अभी। इधर नहीं मोनेटाइजेशन अलाउ, इधर का मोनेटाइजेशन अलाउ बांग्लादेश का बना। सुना था होगा इस साल में, अभी नहीं हुआ। टिकटॉक में हुआ ना, टिकटॉक पे तो कमा सकते हैं टिकटॉक में हुआ ना इधर में। टिकटॉक पे तो कमा रहे हैं लोग। टिकटॉक पे मोनेटाइजेशन अलाउ है इधर, यूट्यूब नहीं। हमारा बांग्लादेश का है ना, बांग्लादेश का है। उधर का नंबर से बोलेगा क्या करना होगा, उधर के नंबर पे एक जीमेल अकाउंट बनाना होगा बस, अकाउंट है ना उधर के नंबर पे।